we are very much happy रिजल्ट को भी लेकर। हाँ, हम एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट पे आप जा रहे हो और एक बड़े-बड़े टीमों के साथ। कि सबका यही माइंडसेट है कि इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस to be the number one team in the world and then go to Asian Games and be the Asian champions. And the idea there really is to take the players well beyond their comfort zones, beyond which any hockey match or tournament might take them. Every match, the girls learned a lot and improved. बहुत अच्छा लग रहा है, टीम में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। Yeah, I think we look at the youth selection with Aditya, one for the future. He needs a tournament, and no disrespect to Raj, he could have played the World Cup as well. He was up playing well, but we also need our full experience in Asian Games. Okay. I'm happy with the progress we are making. People who inspire us every day. Harmanpreet Singh will rank as one of the greatest ever. Hardik Singh will rank as one of the greatest ever. That's how good they are. And now with the World Cup and the Asian Games coming up, focus will be singularly on hockey now that the Commonwealth Games is over. Rahul Giri joining me. Rahul will be there on behalf of Revsportz to cover the event in Netherlands and Belgium. And we will support Indian hockey to the fullest as we have always done. So welcome Harmanpreet, welcome Hardik. Thank you very much for your time. Appreciate you joining me as always. First question, Captain Saab, how is it all looking preparation wise? 2 महीने में 2 इवेंट, मैंने हार्दिक से ये सवाल पहले पूछा है, आपसे भी पूछ रहा हूँ, 2 महीने में 2 इवेंट, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, आप कैसे देख रहे हो? भाई एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छा चल रहा है, ट्रेनिंग एंड लास्ट अभी रिसेंटली जो मैचेस खेल कर आए हैं, आई थिंक टीम की परफॉर्मेंस है, हमने एज ए टीम बहुत वहाँ पे प्रोग्रेस की है और वी आर वेरी मच हैप्पी रिजल्ट को भी लेकर। और अभी जितना भी टाइम है हमारे पास, आई थिंक जितना भी हमने ट्रेनिंग किया है यहाँ पे बेंगलोर में फॉर द वर्ल्ड कप, आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, टीम में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, यूनिटी दिख रही है टीम में। सो आई थिंक वो चीज़ वर्ल्ड कप में आप सबको देखने को मिलेगी कि एज ए टीम हम कितना अच्छा खेल रहे हैं। और अब डेफिनेटली जो हमारा टारगेट है कि इस बार हम वर्ल्ड कप जीते एंड स्कोर्स बैक टू बैक है, टफ है, बट आई थिंक व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी, आपके सामने जब अपॉर्चुनिटी हो तो आपको ग्रैब करनी चाहिए, ना कि एक्सक्यूज देना चाहिए। सो आई थिंक वही एक माइंडसेट है एंड वी आर रेडी फॉर। हार्दिक, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था और ये मैं पूछूंगा इसके बाद राहुल कैन आस्क। मैंने आपसे पूछा था और आपने एग्जैक्टली सिमिलर सवाल आंसर किया था मुझे कि किसी ने किया नहीं है बैक टू बैक ये वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स, किसी ने किया नहीं है, हमारे पास एक चांस है, हम करेंगे। आपने ये मुझे कहा था 3-4 महीना पहले, क्या वही आप सेम चीज कहोगे? आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? इज द प्रिपरेशन ऑन ट्रैक? आर थिंग्स लुकिंग गुड? I think for sure sir, I think same mindset है। जितने भी 20 हमारे एथलीट जा रहे हैं, सबका ये है कि सबका यही माइंडसेट है कि इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस to be the number one team in the world and then go to Asian Games and be the Asian champions, ताकि हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। तो सबका आई गेस कि कोच से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर एथलीट सबका ये है कि वी नीड टू बी आवर 110% जो वर्ल्ड कप आ रहा है, देन उसके बाद एशियन गेम्स होगी, तो सब माइंडसेट सेम है। I'm joined by Sud Mavin, the head coach of Indian women's hockey team. We all know this is an important year for Indian women's hockey team because they'll be playing at the World Cup in August, followed by the Asian Games as well. And of course, in the Asian Games, they will be looking for the Olympic qualification that they have missed in the Paris. First of all, coach, you are looking great in that Barcelona jersey. Hopefully, you are giving the vibes of Ronald Koeman, who is guiding the Netherlands team in the World Cup. But coach, first of all, what are the positive from the Nations Cup and also from that Australia tour as well? Because when you left the team in 2021, the team was really in great shape, and after that, it was really some heartbreaking years for Indian women's hockey team. So finally, do you think after these two outing, the team is looking close to those years? Yeah, these are a few questions, of course. First of all, how did we do Australian tour and the Nations Cup? I'm happy with the progress we are making. I think that is something what went really well. Every match, the girls learned a lot and improved. That is one of the main thing what we want. And the focus on ourselves. Yeah, it doesn't matter against who we play. It's all about ourselves.
And I must say that works really well with the team. I think it works because you don't make your opponent bigger. Yeah, it's just about what you need to do really well to perform in the matches. Now, and if you see one of the things we are looking for, we try to create is more consistency in the team about our level. And in the pool matches, it went a little bit up and down. We created a lot of opportunities, but we didn't score enough to make it ourselves easier. And as eventually in the semis and the final, we did that really well. Very controlled games where we didn't get a lot against us. So that is something the stability was searching for, and I'm really happy with that progress. What kind of challenges they can expect from the opponent in their group. Salima, first of all, preparation कैसे रहा, and also इस tournament में आप captain बन के जा रहे हो, so how excited are you? And also since you have got the captain armband, आपका mindset कैसे रहा है इस टीम में? बिल्कुल, फर्स्ट तो हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे चल रही है। जैसे अभी हम बैंगलोर पे हैं और काफ़ी ज़्यादा जैसे हमारा लास्ट 1 मंथ से हम यही हैं, तो और एक टीम के साथ हैं और यही है कि हम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और जिस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए वो चीज़ हमने किया। बट अभी जाने का टाइम है कि हाँ, हम एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट पे आप जा रहे हो और एक बड़े-बड़े टीमों के साथ पहले भी खेल चुके हैं। बट अभी हमारे एक होता है ना कि एक न्यू टीम बनी है, जो जूनियर्स आए हैं उनके साथ खेलना, उनके साथ एक कनेक्शन बनाना, वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। बट कोई बात नहीं, हम अभी सबके साथ हमारा एक अच्छा कनेक्शन है और एक अच्छा बॉन्डिंग भी है क्योंकि सबको पता है कि किसके पास कितना स्पीड है, किसके पास स्किल है, तो सबको भी पता है कि एक एक दूसरे को हम काफ़ी ज़्यादा भी यूज़्ड टू हो गए हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है। और डेफ़िनेटली कैप्टन इतना ईज़ी नहीं है क्योंकि टीम के साथ टीम को लेकर चलना भी है और खुद का गेम भी खेलना है और टीम के लिए भी खेलना है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट कोई बात नहीं, ये हमारे लिए एक अच्छा मोटिवेशन भी है कि अभी मुझे यंग में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, तो मैं उस चीज़ को एक पॉज़िटिविटी लेती हूँ कि हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छी करनी है और मैं ये जो भी यंग है, जो भी हॉकी को प्यार करते हैं, जो भी चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम रिस्पॉन्सिबल के साथ हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी बात है और यही है कि हम हर एक प्लेयर को सपोर्ट करना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं कैप्टेन हूँ, तो ये नहीं कि मैं हर कुछ बोलूँ, तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हर एक प्लेयर एक होता है ना कि खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, ये कैप्टन ही करे, ये नहीं सोचते हैं जैसे अभी हमारी टीम में है, क्योंकि सारे सपोर्ट करते हैं और एक यही पॉजिटिविटी रहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो हर एक प्लेयर को हम पुश करते हैं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्या अच्छा कर सकते हो, हम एक-दूसरे को पुश करते हैं। अगर आपके पास होता है कभी-कभी उतार-चढ़ाव गोल भी खा जाते हैं, बट उस चीज़ को हम कैसे पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं कि अगर हम 1 गोल खाए हैं तो हम दूसरी गोल मार भी सकते हैं। तो वो चीज़ एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए टीम में, तो यही चल रहा है अभी कि हमारे एक कनेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक अच्छा कनेक्शन है, तो हम एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और एक अच्छा सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा कनेक्शन होगा, आप स्कोर करोगे तो एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ, अभी जैसे लास्ट नेशन कप में हमने बहुत अच्छा एक गोल मारा। जैसे रिवर्स जाने के बाद जैसे हमने इतने सेकंड पोस्ट में टच किया, तो वो एक हमारा कनेक्शन था कि वो कनेक्शन ग्राउंड पे दिखती है, तो वो चीज़ हमारे अंदर है अभी और वो चीज़ हम दोबारा करना चाहते हैं कि नहीं, अगर इस बार हम एक अच्छा मेमोरी बनाए हैं, तो हमें अभी जो भी फ्रंट में आ रहा है टूर्नामेंट उस चीज़ में हम और ज़्यादा काम करेंगे और वहाँ भी जाके हम एक अलग मेमोरी सेट करेंगे। Welcome to this short interview. Thank you very much. So, how is it going on a slightly lighthearted note? Yeah, good. It's exciting. I think we've just finished our fourth week camp, or 4-week camp now. We had a warm-up game against the India A group, and it was successful. It was enjoyable. A little more about the preparations going into a couple of big tournaments coming up. Yeah, I think selection is done for both now, for World Cup and for Asian Games, which is good. And we've had a tough 4-week camp, and I think the guys are just over 2.5 weeks to the tournament. So we leave tomorrow night, and we'll head to Switzerland for a team build, and we'll be there for 3 days, and then we'll break away into Holland and finalize all our final preparations, and then we play 2 warm-up games, one against Argentina, one against Japan, and then we'll play on the 15th, first game against Wales. You talked about selection. There was one interesting player there that was missing from the India squad for the World Cup. That is Rajkumar Pal. But
is there in the Asian Games or squad. So how do you look at this particular selection? Yeah, I think we look at the youth selection with Aditya, one for the future. He needs a tournament, and no disrespect to Raj, he could have played the World Cup as well. He was up playing well, but we also need our full experience in the Asian Games. Okay. Paddy Upton, very familiar face in Indian cricket as well as Indian hockey as well. We all know actually when India clinched bronze at the Paris Olympic. Paddy Upton is the one man who actually worked behind the scene, and this time again, as India men's hockey team all set to take part in the upcoming Hockey World Cup, Paddy Upton has again joined the team as the mental coach of the team, and already has done 3-day camp with the team. So in this video, I'm going to know in details about what the team actually did under the coach, and also how the team is preparing mentally for the upcoming Hockey World Cup as well as the Asian Games as well. Coach, welcome back to Revsportz. Can you give us some details, from the camp that you did actually in Swiss Alps with the team? I think it was a 3 Yes. camp. So, what kind of training session the team underwent through all those details? Yes. Hello, Rahul. Thanks very much for having me. Nice to be on Revsportz and nice to be chatting to your listeners here. So yes, we recently did a 3-day training camp in the mountains of the Swiss Alps. It's something similar to what we did. We did 3 days at a similar time in the lead up to the Olympics in Paris. And the idea there really is to take the players well beyond their comfort zones, beyond which any hockey match or tournament might take them. In hockey, the biggest probably fear or threat might be, breaking a finger or losing a game, where when you in the mountains, on the slopes, the biggest danger there is losing a life, not breaking a finger. So really taking the fear level to the next level. And in order to be able to accomplish some of the tasks that we did with the players, you really need to work excellently as a team. Obviously, team hockey is a team game. But the worst thing that can happen on a hockey field if you don't play as a team is maybe someone gets eliminated and you have to cover for them. Where in the mountains, if somebody makes a mistake, potentially it can mean injury or even death. So it just takes the team building, the team support, backing each other to a new level, rewires the players thinking around fear. And that was sort of with long distance mountain bike rides, some ascents of some pretty steep mountains, some descents of some steep mountains, hanging, some vertical mountains hanging on a piece of rope, where the players were letting themselves down, and they had to take full responsibility for themselves and their own safety. So, yeah, really, really grateful to Hockey India and the Indian government for affording us the opportunity to be able to do something like that. It is definitely out of the box, but we saw pre-Paris, it was really valuable. And again, this time, the team building, the team bonding, we believe a very valuable part of this campaign leading to the World Cup and then Asia Games.